हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल। मेरा नाम भौतिक शेठ है एंड आई एम फाउंडर ऑफ आई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बेस्ड इन सूरत। सो गाइस, आस्क भौतिक एक मेरा व्लॉग होता था जो यूट्यूब पर आज भी अवेलेबल है। और इस सीरीज के अंतर्गत बहुत सारे सवालों को मैंने कवर अप किया था मेरे पिछले वीडियो सीरीज के अंदर। लेकिन पिछले कुछ वक्त से मैंने उस पर डेलिबरेटली पॉज किया है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट सर्टेन गुड मोर न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द पीपल। लेकिन इस बार एक ओपन हाउस के तौर पर मैंने इसको लॉन्च किया है। सो पर्पस ये पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग ओपन हाउस का ये है कि आए दिन बहुत से लोग मुझे अलग अलग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। खास करके इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर मुझे बहुत से लोग डायरेक्ट मैसेज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जिनको इस तरीके से बहुत छोटे मोटे अलग अलग तरह के मार्केटिंग के सोशल मीडिया से रिलेटेड एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते होंगे। सो आई जस्ट थॉट दैट व्हाई नॉट टू स्टार्ट एन ओपन हाउस दैट टू ऑनलाइन, जिसे बहुत सारे लोगों को मैं उनके क्वेरीज को सॉल्व करने में मदद कर सकूं। So I'm not saying that I know everything, to be very frank with you, but yes, I can try to answer your questions. तो आपके पास अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि आपको मुझे पूछना है, तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या तो फिर ऑलरेडी आपके साथ मेरे अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक लिंक शेयर करी गई थी जिसपे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए हैं, जो मैं आज उसी को कवर करने वाला हूँ। तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो। और एक चीज, नहीं ये आज पहला और आखिरी ओपन हाउस नहीं है। सो गाइस, ऐसे ओपन हाउसेस आते ही रहेंगे। और ना सिर्फ ऑनलाइन, लेकिन वी आर गोइंग टू कम विद द इन पर्सन इन हाउस ओपन हाउस ऑल्सो हियर इन सूरत। तो जितने भी लोग सूरत में रहते हैं जिनको ये ओपन हाउस से जुड़ना है हमारे साथ, वो आ सकते हैं। सो यस, आज अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। मेरे टीम मेंबर्स मुझे क्वेश्चंस पास करेंगे और आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पर मुझे एक के बाद एक अपने पूछ सकते हो। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हालांकि मैं यहाँ पर आपको नाम नहीं बता सकता हूँ कि तीनों ने ये क्वेश्चंस पूछा है, लेकिन मुझे जो जो क्वेश्चंस आए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर एक के बाद एक रखता जाऊँगा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसका आंसर आपको पता चलता जाए। चलो, तो गाइस, जो पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पर मेरे पास आया है, वो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, रियल कंटेंट वर्सेस क्रिएटेड कंटेंट। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये क्वेश्चन दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सोशल मीडिया, कि कहाँ पर आप रियल कंटेंट की बात करते हो, कहाँ पर आप आर्टिफिशियल कंटेंट की बात करते हो। सो मैंने पहले आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन के अंदर का जो क्रक्स है वो क्या है। सो गाइस, रियल कंटेंट का मतलब होता है ये जो मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ, दिस लाइव सेशन दैट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ विथ यू, दिस इज समथिंग अ रियल कंटेंट। रियल कंटेंट लाइव वीडियो भी हो सकता है, आपके लाइव पिक्चर्स भी होते हैं, फोटोग्राफ्स भी हो सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें तो आपकी रील्स आपने शूट करके रखी है वो भी हो सकती है, स्टोरीज भी हो सकती है, आपके स्टिल फोटोग्राफ्स भी हो सकते हैं। लाइव कंटेंट इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो जब आप एक लाइव कंटेंट की बात करते हो तो उसका एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, और वो कॉन्टेक्स्ट होता है कि आप वही दिखा रहे हो जो हकीकत में है। सो देयर इज नो फेकनेस इन दैट। आप वही दिखाना चाहते हो और आप वही दिखा रहे हो। तो बेसिकली आई इज वेरी क्लियर कि आप जब जिस तरीके से आप अपने लाइव कंटेंट को लोगों तक पहुंचाते हो, तो लाइव कंटेंट लोगों को तुरंत ही कनेक्ट हो जाता है। एंड फॉर्चुनेटली दिस इंक्रीजेस द ट्रस्ट फैक्टर, कन्विक्शन भी बढ़ाता है, और इसी कारण से लोग कनेक्ट हो सके। कंटेंट की बात है, अगर आप जितना ओरिजिनल कंटेंट रखेंगे, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर योर ब्रांड और बिजनेस। रही बात आर्टिफिशियल कंटेंट क्रिएशन करने की, तो उससे आप दूर नहीं जा सकते। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर कंटेंट स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा पिंटरेस्ट का। अगर आप पिंटरेस्ट यूजर है तो पिंटरेस्ट के अंदर आपको इन्फोग्राफिक्स बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अगर आप यूट्यूब पर है, आप एक वीडियो ब्लॉगर है, तो वहां पर आपको एनिमेटेड वीडियोस काफी काम लगते हैं। उसी तरीके से अगर आप इंस्टाग्राम जैसे
प्लेटफॉर्म पर भी माइक्रो वीडियो अगर आप करना चाहते हो समवेयर अराउंड 15 to 30 seconds, नॉट मोर देन दैट, तो वहां पर आपको एनिमेटेड 2D एनिमेटेड वीडियोस भी काफी काम लग सकता है. सो यस, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों के बीच में बैलेंस करें. एंड आई विश कि आपका बैलेंस आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो. सो गाइस, एज सच देयर इज नो थंब रूल. आई लेट मी टेल यू, एज सच देयर इज नो थंब रूल. और क्योंकि यहाँ पर कोई थंब रूल नहीं है, सो आई विल ओनली सजेस्ट कि आप अपने बिजनेस का खुद एनालिसिस करें और अपने एनालिसिस करने के बाद यू टेक योर ओन कॉल. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था, जो फॉर्म के अंदर है. So guys, I'm going to cover all the questions जो पहले से मुझे लिखकर दिए गए हैं. Then I'll come to your live questions as well. चलो, the second question जो मुझे पूछा गया था, that is, business owners are still treating the tool as a sales agent, digital marketing tool as a sales agent, but not as a communication or as a tool of the communication rather. How to deal with this situation? Well, there is a clear-cut differentiation between digital marketing and digital sales. So first of all, when you are talking about marketing, you are purely talking about marketing, and when you are talking about sales, you are purely talking about digital sales. So there is no differentiation as such. If you see the platform, दोनों के अंदर प्लेटफॉर्म एक ही है, डिजिटल. नंबर वन. नंबर टू, जब आप मार्केटिंग करते हैं तो आपके बहुत सारे अलग अलग पर्पस हो सकते हैं. उस पर्पस में से एक पर्पस आपका होगा कि क्या आप जो मार्केटिंग कर रहे हो उसके अंदर आप ब्रांडिंग करना चाहते हो, आपको लोगों तक अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करनी है. वेदर यू आर कमिंग अप विद समथिंग न्यू इन योर कंपनी, कई बार होता है एक नए प्रोडक्ट वर्टिकल भी आप लाते हो, नए प्रोडक्ट वर्टिकल को आप लॉन्च करते हो, सो यू वांट दैट एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज योर प्रोडक्ट वर्टिकल. So that can be another objective. Marketing has different varieties to communicate. Whereas when it comes to sales, sales is equal to sales. उसमें आपको कोई दो राय लेनी ही नहीं है. तो जब सेल्स की बात करते हो तो आपको या तो प्रोडक्ट बेचना है, या अगर आप सर्विस सेक्टर के अंदर और B2B सेक्टर के अंदर तो आपको लीड जनरेशन चाहिए, जिसको हम हमारे डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, लीड जनरेशन, या आप कन्वर्जन भी बोल सकते हो. तो आपको एक कन्वर्जन के तौर पर भी उसको लेना चाहिए, और जब आप उसको कन्वर्जन के तौर पर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको पर्पसफुली ये करना चाहिए. सो गाइस, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ना मार्केटिंग का है ना सेल्स का है, लेकिन हकीकत में दिस इज समथिंग दैट यू एज अ बिजनेस यू नीड टू ट्रीट इट एज वन ऑफ द मीडियाज. जैसे अलग अलग मीडिया होते हैं मार्केटिंग के. प्रिंट मीडिया ले लीजिए, आप होर्डिंग्स ले लीजिए, आप टेलीविजन मीडिया ले लीजिए. इंटरनेट इज नथिंग बट अ मीडिया. तो उस मीडिया के ऊपर आपको ये काम करना है. आप कभी ये नहीं कह सकते कि टेलीविजन कॉमर्शियल के अंदर जो चीजें दिखाते हैं वो सिर्फ मार्केटिंग है, तो उससे आप कोई बेच नहीं सकता. ये एक गलत सोच है. जब आप एक टीवीसी देखते हैं तो टीवीसी देखने के बाद भी यू कैन डिसाइड दैट यू वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट. एट द सेम टाइम देयर आर पीपल after seeing that particular TVC, they definitely would not like to buy that product, but they are just getting knowledge about the brand and the product. So the idea is very clear that when you use the content on any other media other than internet, you have to focus on either marketing or sales. So you need to also understand the basics of the marketing, that whether you are doing the ATL or BTL, आपका ब्रांड अवेयरनेस करने का आपका पर्पस है, और यू ओनली वांट टू सेल द प्रोडक्ट्स. सो इफ यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ATL मीडिया, then the idea is you only want to do the branding activities. But digital is something that comes under the specific segment of TTL, not entire digital, but if you talk about social media, that also comes under through the line TTL media. So here your objective can be to do marketing or can be to do the conversion. So yes, you can see to both the factors, and I personally feel that in any case you are going to get your result if your communication go in the right direction to the right people. So if you are doing marketing, please focus on branding activity, taking people to the website, traffic बढ़ाइए, उसकी activity पर देखिए. More you have to focus on the social media engagement. Reach out to maximum number of people, connect them with your content, and try to engage them more and more. Again, if your audience is available on Facebook, focus on Facebook. But if you feel that your audience is available on Instagram, please be there and focus on the Instagram. Same with the LinkedIn and same with the Pinterest as well. So yeah,
It is neither marketing tool nor sales tool. Digital is just a medium that you have to use either for the marketing or for the sales or for the both. So that was the second question that was asked to me. Okay, now taking the third question. We are in 2022 and still people are discussing logo placement and color combination on social media creatives. How to deal with this kind of client mentality? Okay, so guys, I personally feel this question was asked by somebody who is working in a digital agency. But yeah, I can relate with this question because this is a very common question. It's a damn common question, guys. So let me tell you, because we also deal with this agency, we are on into agency, so हमें भी ये questions कई बार आते हैं that exactly how to deal with all these things. So let me tell you one thing, that social media content, the social media creatives are one of the ways to communicate about your content. So whatever content you wish to inform to your audience, you take the support and the help of the creative tools. So अगर कोई फेस्टिवल है, जैसे अभी पिछले फ्राइडे की बात करें, दैट इट वाज अ गुड फ्राइडे एंड देन केम ईस्टर. तो ये जो फेस्टिवल्स आए, रामनवमी आया, हनुमान जयंती आया, रमजान का महीना है तो रमजान आया. So you want to wish, you want to send the greetings to your audience. At that time, you are creating some beautiful creatives. Now, when you create the creatives, you want to put some creativity into it. And at the time of putting a lot of elements to show your creativity, you just need to make sure that that is one of the messages that only you want to pass through your creative content. It's nothing else. So rather than focusing on logo छोटा करना है, logo बड़ा करो, इधर place करो, उधर place करो, I personally feel that this is the role of the digital marketer. This is the role of the team who works for a client on digital marketing for the purpose of digital marketing. I think all the customers and the business owners should leave it upon to those agencies. If you have the conviction in them, I think आपको उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए. Let them decide whatever they are doing because it's their job and it's their responsibility. According to my understanding and my knowledge, guys, no agency, no digital agency, at least here in India and maybe everywhere in the world, वो कभी भी किसी client का खराब बुरा नहीं चाहेंगे. So this is a very wrong concept also, that if you are not putting the trust in your agency itself, so I think this is not going to help. So please focus. This is for the business owners. I think they all need to focus on the core element of the business, and core element of business are so many, not only marketing. We all know that marketing is one of the elements, but not the only elements. And I personally feel, because I run a business, मैं खुद ये मानता हूँ that I don't only focus on marketing of my services or sell or getting the leads so that I can convert them into the clients. I also focus on my HR activity. I focus a lot on my processes. I focus a lot on my accounting system. I also focus a lot on management information system and how I can make the smooth processes so that I can give better and faster result to my clients. So guys, this is the role of a business owner. It's not the role of the business owner to go and check whether the size of the logo is good or not, or whether the color combination is good or not. I think they should leave it upon to the people who are actually doing it for them. And I think that is the best way to cope up with your pressure of running the business, rather than सब काम खुद करे और उसी तरीके से काम हो. You can come out from that particular typical mentality of the entrepreneur. Okay, now going to the fourth question, guys. Okay, the question is, I have seen your post last week regarding a design agency, marketing agency, or digital marketing agency. Okay, so can you please make us understand the difference? Okay, so those who are not knowing this, that what exactly this post was about, I think you can go and check my Facebook. You can also go and check my Twitter, and you can go and check my LinkedIn. तो वहां पर आपको ये पोस्ट मेरा दिखेगा. सो आइडिया अबाउट पोस्टिंग दैट वाज that this is my personal experience of more than 15 years now, that so many business owners, they literally are very confused when you meet them. They are actually getting confused between so many things, and this, out of so many things,
the three major things that I could always find in them is number one, they are not clear whether they want to hire a design agency. So the role of design agency is nothing to create some creatives and design and provide it to the client so that client can post it on social media. Client can take the printout and create the banners and hang it on their and on the wall of the office. So this is what they normally look. This is the design role of the design agency. Then there are clients, they are not clueless whether they want a marketing agency or not. Now, when they are actually, they want कि भाई मुझे कौन सी मीडिया पर मार्केटिंग करना है, मुझे लिफलेटिंग करना है, should I go for the paper advertisements, should I go for the television commercial, should I buy this out of home hoarding or not, and they're actually looking for the marketing people. So they want a full-fledged marketing company that can not only help them on digital platform, but rather than doing digital exclusively, they can purely focus on the marketing as a core. That was the second thing. And then there are third type of people who actually look after the digital marketing aspect. So now the third kind of people are basically those people, those companies or those agencies who are specialized on marketing on internet. They know search engine optimization, they know social media marketing, they know how to create the content and how to publish it, what kind of content will work, what may not work, maybe if at all there is a role of hashtag or not, what is trend in trend and how to leverage the trend. So ये उनका काम होता है. Even ad campaigns, कितना budget रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, this is their role. But this is your business. If it is your business, you are the best person to take a judgment. Kindly do not over rely on any agent. You have to work together. जब आपका पूरा अपना जो बोझ है अपना बिजनेस चलाने का, जब आप एक थर्ड पार्टी एजेंसी के कंधे पे रख देते हैं, तो वो आपका कभी एडवांटेज होगा ही नहीं. बिकॉज व्हेन इट्स योर बिजनेस, यू हैव टू वर्क इट एज योर ओन बिजनेस. यू कैन कोलैबोरेट विद एन एजेंसी. आप एक एजेंसी के साथ काम के करके ही उसको आपको काम करना होगा. सो आई थिंक एज एन बिजनेस ओनर यू हैव टू बी damn clear about what kind of agency you want to work, and I think it is going to help you a lot, so that ऐसा ना कि आप एक डिजिटल agency के साथ ad campaigns की बात, basically not talking about these things, rather you are only talking about one thing, and that particular one thing may be only designing elements. And I think you better go and hire the creative agency if your requirement is specifically looking forward to the designs only. Yeah. So guys, next question. What is the real parameter to evaluate any digital marketing agency? Cost, experience, industry or technical knowledge, creativity, what? Okay. तो आई थिंक ये सारी चीजें साथ में ही आती है, तो आप एक एक एलिमेंट को नहीं ले सकते. दिस ऑल गोज टूगेदर. सो पहले तो आपको एक एजेंसी को हायर करने के लिए एक, हाँ, दिस इज वन थिंग दैट आई एम वेरी क्लियर अबाउट, वो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए. कभी भी याद रखिएगा, जब आप एक एजेंसी हायर करते हैं digital marketing के लिए, this is again for the entrepreneurs who are watching this or maybe who are going to watch it in the future. You normally decide to work with a digital agency by looking at a person who leads the agency. आप उसको देखते हो जो उस एजेंसी को चलाता है, आपको ये लगता है कि that he is the person or she is the person who is the face of it, और उसकी वजह से आप उसके पास जाते हो. But the point is एग्जैक्टली वही आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, वही आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है. प्लीज अंडरस्टैंड द पर्सन दैट यू सी ऑन सोशल मीडिया एंड देन यू डिसाइड दैट मुझे इसके साथ काम करना है. नहीं, वो आपके प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगा. अगर वो आपके प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो बाकी के क्लाइंट्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता, प्लस खुद का ब्रांडिंग नहीं कर सकता, प्लस खुद का कंपनी का मार्केटिंग भी नहीं कर सकता. So this is a very clear-cut thing. Please do not expect that person to do that. If you want to hire that person, you can ask for his or her exclusive consultancy that can guide you in the right direction, or you rather better focus on the team of
under whom like the team of that agency. So अगर आप एक एजेंसी की टीम को देखेंगे, the people who are working in the as a team in an agency, and I think you should go and check who are the people and how knowledgeable they are and how experienced they are, what kind of projects they worked upon, and just focus on them. So guys, I personally feel that this is very important that आप एक एजेंसी को हायर करने से पहले सी कॉस्ट सर्विस सेक्टर के अंदर वेरिएबल चीज होती है. So please understand one thing, the cost is variable thing. Now let me tell you another thing, that why hiring a digital marketing agency is always going to helpful to your business, because creating an in-house team is going to be very expensive. If you just understand, if you're hiring a person for search engine optimization, for ad campaigns, for social media marketing strategy, for content writing, for ad copywriting, for designing, for 2D 3D animated video creation, if you see, there are total 7 different people you want in house, and if you count the salary of these 7 people, it is obviously going to be a huge number. And I think rather than hiring 7 people, उनको salary देना, कभी कोई छोड़ के चला जाए, उसको आप वापस लेकर आए. So the point is, it seems very difficult for a normal organization to hire, to have an in-house people. So yes, you have to work with the agency, and I think that is the right answer. That is the right way to do that. और यहाँ पे कॉस्ट को जस्टिफाई करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एवरीबडी विल डेफिनेटली कम विद द different set of mind, different set of services. So rather, I personally feel you better see to the experience of the team members of the company. उनके जो टीम होती है उनके एक्सपीरियंस चेक करिए. You also check whether they have industry knowledge or not their industry but your industry. आपकी इंडस्ट्री का नॉलेज देना बहुत जरूरी है. प्लीज अंडरस्टैंड, the marketer is only a good marketer if the marketer understands your industry. If the team, the digital marketing team, is not able to understand your industry, believe me, they will they cannot justify with your communication strategy. So yeah, they need to understand what exactly you are into, what kind of industry you belong to, and what are the things that they need to take care when they are creating the marketing communication. And I think yeah, you have to work with along with them rather than asking only कि भाई आप काम करिए हमें तो चलेगा. So yes, that is my point on this. Okay, now the question is coming from the SEO side. Is buying bots to bring page views to a website affect the SEO and paid marketing campaigns? So now question is related to bots. Okay guys, so the bots के related अगर question है तो मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि bots भी दो तरह के mainly होते हैं. There are some good bots and there are some bad bots. So good bots क्या होते हैं? Good bots में भी बहुत सारे तरह के bots होते हैं, crawlers होते हैं. So search engine के bots होते हैं जो Google, Bing, Yandex, ये तरह के सर्च इंजन होती है. तो ये जो बॉट्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट पर आते हैं, दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड दे इंडेक्स योर पेजेस इन द डेटाबेस. तो दीज आर द गुड बॉट्स. सोशल मीडिया के बॉट्स होते हैं, सो फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इनके भी बॉट्स होते हैं. ये बॉट्स भी आपकी वेबसाइट पर आकर क्रॉल करके जाते हैं. देन देयर आर सर्टेन बॉट्स जो आपको डेटा के एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी है. So they will come to your website and collect the data for the analysis purpose, because this is the question of SEO. Let me tell you that SEMrush, Href, ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसके भी बॉट्स होते हैं. तो ये भी बॉट्स आते हैं, they come to your website, they collect the information and it helps you in generating certain kind of reports. So when you talk about the bots and the whole on search engine optimization, the first thing is good bots are not going to harm your website. But when it comes to bad bots as such website को harm कर सकता है. SEO के अंदर उसका as such कोई रोल नहीं है. So let me tell you, अगर आपकी वेबसाइट आपने कहीं पे होस्टिंग की है and all of a sudden you see the spike in the traffic, sudden spike. मतलब अगर आप अपने, if you see your Google Analytics and your graph is going like this, all of a sudden it will go like this. It means there is some doubt in that. And that can be because of the bots. Bots never gives you the real traffic, and it increases the bounce rate. It comes and immediately leaves the website. So that it increases the bounce rate, and hence it is not going to give you any advantage. But overall,
the server जो आपका server है website का, that can block your website because of the uncertainty in the traffic, the a kind of suspicious activity that happens on your website because of these bad bots, and that can be malware also. So the point is, no, bots will not affect your organic SEO activity other than increasing the bounce rate and all of that, but it is not good for your website's overall health. So I think you just need to see that बॉट्स क्या है, किस तरीके के हैं. लेकिन एक फेक ट्रैफिक जनरेट करने से कुछ भी आपको ना ही ऑर्गेनिकली कुछ हासिल होने वाला, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग ऑर्गेनिकली, नीदर यू आर गोइंग टू गेट एनीथिंग फॉर द पेड प्रमोशन. सो दैट इज ऑल्सो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, what is the status of use of virtual influencer in India? Okay, guys, so these are very early days to say anything on the status of virtual influencer, because I personally feel that virtual influencer are not for a day or two. They are going to stay here for longer period of time. See, as far as the brands have belief on them, तो मैं ये मानता हूँ कि जब तक ब्रांड को बिलीफ है ऐसे लोगों पर who are virtually influencing so many people to take the decision in the favor of brand, I think it is here to stay. Number one. Number two, it is also very important that how the audience is reaching out to the virtual influencers. That is also very important. So if that is the role of metaverse into it in the future, I think this can be a very game changer in the future. That that, like, just imagine that, guys, I'm wearing my VR glasses, and in the metaverse I'm going through certain content, and all of a sudden Virat Kohli comes and he start promoting Puma shoes, so that I can see in 3D avatar and I feel that. And not only him, but I'm seeing the way he's wearing the shoes and playing cricket, and that can influence me a lot. That can impress me a lot. So if this kind of things are going to happen, so मैं मानता हूँ कि yes, ये थोड़ा बहुत आपके लिए होगा. मतलब it is definitely going to help your businesses in the future as well. And absolutely, this sounds very interesting and good also. But yeah, it's still these are little bit early days to comment anything positive or negative in this part. SEO versus PPC versus SMM, best career. Okay, so simple question in a very short format. Somebody has asked to me. Okay, so guys, search engine optimization or ads, Google ads, or overall digital ads, or social media marketing. So guys, please understand these all three are different things that works on digital. So ये तीनों एक नहीं है. So kindly do not compare. So let me put it like this. If you want to give a floral bouquet to somebody, you are going to put multiple flowers into it. You are going to use the red roses, you are going to use tulips, you are going to use lilies. Now, all these flowers are flowers, but very different in the nature, in the color, in the shape, in the fragrance. But because they are flowers, this all together in combined completes the floral bouquet. Similarly, when you talk about digital marketing, you require somebody who knows search engine optimization, digital ads, social media marketing, and everything. You want this kind of people when you create your own bouquet of digital marketing. So first of all, if you are good at technical side, technically if you are good, I think you should go ahead in the direction of search engine optimization. If creativity wise, audience connection wise, if you are very much clear about understanding the behavior of your people, like marketing with subject to the consumer behavior. If you understand that very well, if you think that you are very much creative person, if you love to stay in market by knowing what is happening around you, then I think you should go for the in the direction of social media marketing. And if you are the person who loves challenges a lot, and if you are the person who understands the sales very well, that what can be sold, what cannot be sold, अगर आप इस तरह के person हो, तो you can go in the direction of
PPC, that is एड्स, गूगल एड्स ले लीजिए, कोई भी एड प्लेटफॉर्म ले लीजिए, सो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं. So guys, I think there is no general answer to this question, but the answer falls under the category of exactly आपको क्या अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट क्या है. बट हाँ, एक बात ध्यान रखना, you have to become jack of all, master of jack of all and master of one rather than master of none. आपको सब समझ में आना चाहिए कि मास्टरी तो एक में आपको लेनी ही चाहिए. Rather than becoming jack of all and master of none, it is not going to helpful to you in your career. At least एक मास्टरी आपको लेनी चाहिए. चलो एक ऐसा ही कुछ, because we were talking about the tools and all that. This is a question that I received. What is DV360? Okay, DV360, DV का मतलब होता है गूगल का डिस्प्ले एंड वीडियो 360 मार्केटिंग प्लेटफॉर्म. तो ये एक ऐसा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, अगर आप गूगल एड प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो गूगल ने कुछ साल पहले इसी तरीके से अलग एक्सक्लूसिव मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उन्होंने किया था. सो ये जो एक एक्सक्लूसिव एक प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया, जिसके अंदर आपका एनालिटिक्स भी है, आपका जो टैग होता है गूगल टैग मैनेजर, वैसे टैग मैनेजर भी है, ऑप्टिमाइजेशन के अलग अलग एप्लीकेशन भी है, पूरा का पूरा आपका डेटा स्टूडियो वहाँ पर है. सो देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कुछ अच्छे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कैंपेन मैनेजर 360 होगा, DNV डिस्प्ले वीडियो 360 कैंपेन है, वहाँ पर सर्च एड 360 भी है. सो DV360 इज बेसिकली पार्ट ऑफ गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म along with display and video is a campaign manager 360, search ad 360, optimize 360, analytics 360. अलग अलग तरह के वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे. सो या ये अनलाइक, इट्स नॉट द सेल्फ सर्व्ड प्लेटफॉर्म लाइक गूगल एड्स. इट इज समथिंग दैट यू हैव टू कॉन्टेक्ट टू द सेल्स टीम एक्सक्लूसिव, और ये आपको गूगल के सेल्स टीम से बात कर आपको एक एक्सक्लूसिव सिस्टम सब्सक्राइब करना पड़ता है, और ये अलग तरीके से चलता है. गूगल एनालिटिक्स भी आपका एनालिटिक्स 360 हो जाता है. सो या DV360 आप तभी यूज करना चाहिए, आप तभी यूज करते हो व्हेन यू आर रनिंग अ बिग एजेंसी एंड यू आर वर्किंग विद द बिग ब्रांड्स. सो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड शुड बी देयर ऑन DV360? आई थिंक Amazon, Myntra, all these brands should be there on DV360. So yes, that you can do that. You if you are doing marketing for this kind of brands, I think this is your thing to go ahead. Okay. Another question is digital marketing an IT sector? Okay, no. Unfortunately, anything that happens on internet and computer is not equal to IT, first of all. So this is something like that. If you are managing accountancy on computer, it doesn't belong to IT, right? So guys, digital marketing, see, it's nothing. It's a marketing. It's just a marketing. If you know marketing and if you understand technology, you can mix both of them, understand the different platforms, and start working on those platforms to reach out to the audience, to convert your audience into sales. Hence, it is digital marketing. So I don't feel that digital marketing is a sector. I personally feel digital marketing is nothing but one of the methods of doing marketing. और ये जो one of the methods है marketing करने का, तो वो आपको like it is going to help you to reach out to the audiences broadly, and that is how you can be reaching out to the people to communicate with them. So no, this is not a sector. I personally think this is not a sector. Okay, so I think let me go through that. If at all I have more questions to see. Okay. Okay, guys, I think I've covered up all those questions and I don't see more questions here. Yeah. Yes, guys, thank you so much for connecting with me in the first series and rather first session of Ask Bhautik
जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कम अप विद दिस काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओपन हाउसेस. So this was the first attempt to go live this time. If you wish to watch all these things, okay. So I got one question. So before I end up, let me take this last question, and then I'm going to wind up for the day. No, I think I have taken that. It's a very similar kind of question. So I have already taken this question, so I'm not going to take that again. So I think the person who has asked me the question, please go and watch the video. So no, the question is related to is digital as people are taking digital platform as a sales agent and not as a marketing communication. So no, I've already covered up this question. So yes, guys, again, if you wish, you can connect with me again in the future. And I'm going to do this again and again so that if you have any query related to digital, please feel free to ask me the question and I will be more than happy to answer the question. You can go and check out my YouTube channel. There's so many such series of Ask Bhautik where I've covered up so many different topics and tried to solve from my own way. So I normally keep it in Hindi so that most of the people in India can understand, nothing else. So most probably you are going to see so many videos in Hindi over there. So please go through that, watch that. If at all you have any question, never hesitate to ask me the question by sending it directly as a DM to me on Facebook, LinkedIn, Twitter, or maybe Instagram. You can send me the question. Either I will directly revert to you, or maybe in the next session, in my another episode of Open House 2, I will cover up your question. Thank you so much for joining and have a wonderful day ahead and have a wonderful rest of the week ahead. Thank you so much.